Hello everyone. The restoration period, that is very important period. In this lecture, we talk about the King Charles I and II and his exiles. We will also discuss the changings in literary works. Let's start our work. After the restoration in 1660, when Charles came to the throne, there was a complete repudiation of the Puritan ideals and way of living. उर्दू में साथ साथ आपको समझाता चलता हूँ कि जब रेस्टोरेशन पीरियड आ गया था चार्ल्स जो है किंग वो वापस आ गया था तख्त पर तो जो प्यूरिटन आइडियाज थे और वे ऑफ लिविंग था उनसे डिक्लाइन होना शुरू हो गया था इसको चूंकि नए थॉट के साथ आया था इस तरह से इन इंग्लिश लिटरेचर में द पीरियड फ्रॉम 1660 टू 17 इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ रेस्टोरेशन 1660 से लेके 1700 तक जो ये इंग्लिश अदब के अंदर ये जो दौर है ये पीरियड ऑफ रेस्टोरेशन कहलाता है बिकॉज मोनार्की वाज रिस्टोर्ड क्योंकि बादशाह जो थी वो दोबारा से बहाल हुई इंग्लैंड में एंड चार्ल्स टू द सन ऑफ चार्ल्स वन जो चार्ल्स वन का बेटा था चार्ल्स टू वो बादशाह बना हु वाज बीइंग डिफीटेड जिसे शिकस्त हुई थी एंड बिहेडेड केम बैक वापस आया टू इंग्लैंड फ्रॉम हिज एग्जाइल एग्जाइल्स कहते हैं अपनी जिलावतनी से इन फ्रांस एंड बिकम द किंग और बादशाह बन गया It is called the Age of Dryden because Dryden was the dominating and most representative literary figure of the age. As the Puritan who were controlling the country, जो कंट्रोल कर रहे थे पूरे मुल्क को and were supervising her literary and moral social standards were finally defeated. A reaction was launched against whatever they held sacred. The poets and the dramatists of the Restoration period begin to imitate French writers and especially their voices को क्या शुरू कर दिया था शायरों ने और ड्रामेटिस्ट ने कि जो फ्रेंच को नकल करना शुरू कर दिया था स्पेशली कहते हैं खास तौर पर देयर वॉइसेस उनकी बुराइयों को उसके बाद है जी द रिजल्ट वाज दैट नतीजा ये था द ओल्ड एलिजाबेथन स्पिरिट with its patriotism, its love of adventure and romance, its creative vigor and Puritan spirit, with its moral discipline and love of liberty, become things of the past. ये बहुत ज्यादा लॉस हुआ है जी दोबारा से देखें क्या है द रिजल्ट वाज दैट नतीजा ये था दैट द ओल्ड एलिजाबेथन स्पिरिट with its patriotism, its love of adventure and romance, its creative vigor and Puritan spirit with its moral discipline and love of liberty becomes things of the past. यानी कि सारा कुछ ही खत्म हो गया था. Instead of using grandiloquent phrase involved sentence of Latin quotations and classical elegance, the Restoration writers, under the influence of French writers, gave emphasis to the reasoning rather than romantic fancy. यानी कि रोमांटिक का जो कॉन्सेप्ट है उसे खत्म कर दिया और रीजनिंग के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया एंड evaluate and exact precious way of living consisting of short, clear cut sentences without any unnecessary word. The Royal Society, which was established during this period, enjoined on all its members to use a close, naked, natural way of speaking and writings as near the mathematical plain lengths as they can. Goodbye to everyone.